So, good morning, children. This is our fourth chapter from supplementary textbook for this session. So, today I'm going to explain a line-wise it because for this session 2020-21 everything has changed. There is question pattern, syllabus. For this book supplementary only 5 chapters you have to complete it, and this is the fourth one. Under the question mostly objective types, and every questions had a but set on a particular issues from a statement or sentence, so we need to know thoroughly, and that's why that is what my decision to conduct every chapters line wise, so through follow the discussion thoroughly. So first, this is the story on the face of it. If you think about the title and theme, on the face that is what appeared to be, on the face what appeared to be, but reality is something different. That is, this is the main theme of the story is main theme is uh, a person who is not handicapped by birth, maybe partial handicapped of leg, hand, or any other things, but it is our society who incorporated the feelings of handicapped in the mind, and when mind became handicapped the person can do nothing. But you can find, if you go through the history of great person, many person who are physically handicapped but they created miracle. For example, but Helen Keller and many others, many more you will find throughout the world history. So what happened, a person who is handicapped physically but he becomes totally handicapped by the society, constantly abusing, a degrading look towards them, and a sympathetic attitude. That is what they feel something inferior doing. ये खुद को छोटा सोचना लगता है और उसका फीलिंग्स थॉट एंड क्रिएशन एवरीथिंग छोटा बन जाता है. तो the title suggests on the face of it that something appeared to be, but that is not really. Reality is something different. That is the thematically the title is appropriate. Thematically the title is appropriate. And what is the theme? Theme is the handicapped is not a natural phenomena, it is the creation of society. That is what here the main two characters of the story, Mr. Lem, an army officer, retired army officer who lost his leg in the battle, and another character Derry, a 14 years boy whose face burned somehow. So he's both are physically handicapped, his face burned and his leg that is lama footed. The two characters, how they get confidence, how they get close together for that handicap, which one things that united them. That is what the theme of the story. Theme of the story is the handicapped is not a natural phenomenon, it is a creation of society. That is what you find in the theme. That is what the main topics. Now let's start line wise. So first, Lem, he was totally depressed and he wanted to escape from reality. Reality is society where he always degraded, looked by as a something inferior creature, and that's why he wanted to hide himself. And on the way he reached the garden where Mr. Lem, the retired army officer who lived, and there is the 14 years child boy who wanted to hide from the society. And on the way he entered the garden of Mr. Derry, जो garden है secluded प्लेस में अकेला सुनसान जगह में रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी उसको जैसे नीचा करके देखते हैं, ये फीलिंग्स उसको अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए उसके हैंडीकेप्ड लेग को छुपाने के लिए, खुद को सोसाइटी से छुपाने के लिए एक गार्डन में रहते हैं. लेम, डेरी एंड लेम, is that clear? Two characters. So on the way Mr. Lamp was in the garden and Derry the child, he entered his garden and the conversation started. Total story presented in a dramatic way. This is a story in a dramatic way, na? Because supplementary textbook is only for stories. Here you will find only stories, and this is also a story in a dramatic form. तो फर्स्ट मिस्टर लेम माइंड द एप्पल्स. जब वो गार्डन में एंट्री किया डेरी, तब लेम बताया देख के चलो एप्पल पड़े हुए हैं गार्डन में, उसमें तक करके स्मैश ना कर दो, मसक ना दो. व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर? बिकॉज डेरी
unexpectedly heard the voice, Mr. Lim. He thought no one was there. डेरी ये सोचा था ये गार्डन में कोई नहीं होगा, खुद को छुपाने के लिए वहाँ पर आए थे, बट कोई है. दैट इज़ व्हाट अनएक्सपेक्टेड. Lamb's my name, mind the apples, crab apples, those are windfalls in the long grass, you could strafe. तो वो सब बड़े बड़े एप्पल जो हवा में गिरे हुए हैं, क्रैब्स एप्पल है जिससे जूस बनते हैं, एंड दैट्स वाई डोंट स्मैश देम. तो डेरी आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, दैट एज एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड. डेरी सोचा से ये खाली जाएगा है, एंड आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी बॉडी हेयर. मैं ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर कोई होंगे, बिकॉज ही केम देयर अनइंटेंशनली टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द डिग्रेडिंग लुक एंड एब्यूसिव सेंटेंस फ्रॉम द सोसाइटी. उससे बचना चाहते हैं, उसका फेस कोई पसंद नहीं करते. दैट्स वाई ही केम देयर. दैट्स ऑल राइट, आई एम हेयर. व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय? दैट्स ऑल राइट. क्यों डरते हो? ठीक है, मेरे गार्डन में आए, मैं तो मना नहीं किए. एंड दैट्स आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस, क्योंकि बाहर में जो घर है वो भी खाली था, ये गार्डन भी मैं खाली सोचा. एंड दैट्स वाई आई एंटर्ड. मिस्टर लेम, सो इट इज़, सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन इट इज़ एम्प्टी. तो मैं गार्डन में आ गया तो घर तो खाली ही रहेंगे. Until I go back inside, in the meantime, I'm out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. इतना सुंदर टेम्परेचर, वेदर और ब्यूटीफुल डे, स्प्रिंग सीजन, और इस टाइम घर के अंदर कोई रहते हैं. दैट्स वाई आई एम इन द गार्डन. तो द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड विद डेरी एंड लैम्ब. इज दैट लैम्ब, ही इज आर्मी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, एंड who in order to hide himself from the society, he started living in that secluded garden alone. And Derry, the child, again a handicapped one, who also want to hide from the society, this degrading look and abusive sentence about their handicaps, and that's why he entered there. And sudden interruption by Lem. Next, Derry, I have got to go. Then immediately Derry, that same feelings, सोसाइटी के सामने आने उसको डर लगता है, तो मेरे को जाना है ना. नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन. मेरे को खराब नहीं लगता कौन गार्डन में आया ना. द गेट्स ऑलवेज ओपन, मेरे गार्डन का गेट हमेशा खुला रहता है. ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, अकेले तुम जो क्लाइम गार्डन वॉल होके आए हो. यू आर वॉचिंग मी. टेरी रियली एंग्री, गुस्सा हो गया ना. एक तो छुपने के लिए आया, सब छुपा हुआ चीज़ों देख लिया, तो अब मेरे को देख रहे थे. मिस्टर लैम, आई सॉ यू, but the gates open, all welcome, you are welcome. I sit here, I like sitting. सबको मेरे गार्डन में वेलकम है, आपको भी वेलकम किया जा रहा है, मैं यही गार्डन में बैठे रहता हूँ. I had not come to steal anything, मैं चोरी करने कुछ नहीं आया. That is what really he is speaking. Derry is not here to steal anything. He wanted to hide himself from the society. He steal himself. That is what his intention. वो कुछ गार्डन का चोरी करने नहीं आया था. He is really truthful. Mr. Lam, no. The young lads steal, scram the apples. You are not so young. छोटे बच्चे वो स्क्रैम्पल कर देते हैं, पैर में मसड़ देते हैं या चोरी करते हैं. आप तो उतना छोटे नहीं हो डेरी. आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, मैं जस्ट गार्डन में आना चाहते थे. सो यू डिड हियर ऑफ देन, तो आप आए हो और हम, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर हैं. डेरी, यू डोंट नो हु आई एम, आपको पता नहीं मैं कौन हूँ. ए बॉय 13 और सो, एक बच्चा 13 साल का मे बी. डेरी नहीं, 14 है, 14 फॉर, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय. मेरे को अभी जाना है ना, मेरा 14 ईयर्स. तो डेरी इज 14 ईयर्स बॉय who wanted to hide from the society for that degrading look because his face is burnt already. Mr. Lam, nothing to be afraid of, just a garden, just me. डरने का क्या है, यही तो गार्डन है और मैं हूँ. That is what he wanted to give confidence him and encouraged him to stay there. But I am not afraid. People are afraid of me. मैं नहीं डरता हूँ, लोग मेरे को डरते हैं because of my burnt face. That is what will be clear next ना. Next, Lem, why should that be? लोग क्यों डरेंगे आपको? Everyone is. It does not matter who they are or what they say or how they look, how they pretend. I know, I can see. See what? आप क्या देख सकते कि लोग मेरे से डरते हैं, डरने का कोशिश करते हैं, मैं उन लोग छुपाने का कोशिश करते हैं. दैट इज़ व्हाट द डेरी का एक्सप्रेशन ना, क्योंकि जानते हैं कोई उसको फेस टू फेस बात नहीं करते क्योंकि उसको जला फे. सी व्हाट, लोग क्या देखते हैं आप में. What they think, उन लोग क्या, what do they think then, तो लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में.
You think here is a boy, you look at me and then you see my face and you think that's bad, that's a terrible thing, that's the ugliest things I ever saw. You think poor boy, but I am not poor underneath. You were afraid, anybody would be. I am, when I look in the mirror and see it, I am afraid of me. सब डरते हैं मेरा ये जला हुआ फेस, सब, इवन मैं भी खुद डर जाता हूँ. दैट इज व्हाट द एक्सप्रेशन ऑफ डेयरी है. नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, पूरा नहीं, आपका पूरा जले नहीं है ना, तो पूरा आप थोड़ी ना खराब है. एंड दैट इज व्हाट Mr. Lem tried to incorporate a feelings of confidence. That is, handicapped is not a naturally. It is a creation. And you can create something miracle. You have a whole body, whole brain, everything. That is what he is going to explain here. Lem, because Mr. Lem can feel the pain of another handicapped. A handicapped person can feel the pain of another handicapped person. That is what the general psychology. Mr. Lem, yeah, Derry, yes, pause. Later on, what? It's a bit cooler. I will get the ladder and a stick and pull down those crab apples. They're ripe for it. मैं बाद में थोड़ा और ठंडे होंगे ना वेदर, तब लेडर लगा के स्टिक लेके वो सब एप्पल को तोड़ूंगा. दे आर राइप फॉर इट. आई मेक जेली एंड दैट इज अनदर फिनोमेनन कि ज़्यादा एप्पल हो गया एट दैट टाइम, उसका कॉस्ट कम मिलेंगे तो उसको जेली बना के रख लो. जैसे टमाटो ज़्यादा हो जाता है तो उसको पिकल या सॉस बना के रख लो ताकि वो कॉस्टली भी होंगे. एंड दैट इज़ व्हाट अनदर वे, तो एप्पल को जेली बना के रखेंगे. इट्स ए गुड टाइम फॉर ऑफ ईयर. सेप्टेम्बर, लुक एट देम. सेप्टेम्बर, ऑटम सीजन ना. Orange and golden, that's magic fruit, I often say, but it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. आप मेरे को हेल्प कर सकते. Lamb was seeking and directly what Lamb wanted to turn the conversation to another point, क्योंकि Lamb जानते हैं कि वो उसका सॉफ्टेस्ट कॉर्नर है, वहाँ पर वो उसको पेन और सफरिंग आते हैं. एंड दैट्स वाई he tried to turn the conversation towards the apple from his burned face. उसका जला हुआ फेस से एप्पल की तरफ डिस्कशन को ले जाना था. What have you changed the subject for? Immediately Derry identified. आप टॉपिक को क्यों चेंज किया? People always do that. लोग यही करते हैं, मेरे को अवॉइड करते हैं. Why true and is not there? In case, and don't you ask me, why do you do that? They all do and pretend it, and is not true and is not there. In case I see you looking and mind and get upset, I will tell you. Don't ask me because you are afraid to. लोग यही करते हैं, मेरे तरफ घूमते हैं और दूसरा टॉपिक में उन लोग घूम जाते हैं, भान करते, दिखाने का एक तरीका करते हैं ताकि मैं इसमें अपसेट ना हो. उन लोग डरते हैं. यू वांट मी टू आस्क, तो आप चाहते हो कि मैं आपको पूछूं, सो से देन. ठीक है, तो आप बताइए. Lem wanted to incorporate the confidence that handicapped is not a matter, that you are not whole parts handicapped. I don't like being with people, any people. मैं लोग के पास आना नहीं चाहता हूँ. And that's why he entered the garden secludedly. That is what stealthily he entered the garden to hide himself from the society, from the people, from their degrading look, abusive sentence. ये सब से वो भागना चाहते थे. And that's why he entered the garden. Next, Mr. Lem, I should said to look at it. I should say you got burned in a fire. हाँ तो ठीक है, अब बताऊँ मैं, आप जल गए हो. Not in a fire, आग में नहीं जला है ना. डेरी बताए. I got acid all down that right that side of my fence and it burned it all away. I ate my face up. It ate me up and now it's like this and it would not ever be any different. ये एसिड पड़ गया था और एक साइड जला दिया, और एक साइड नहीं, वो मेरा पूरा खुद को जला दिया, मेरी ज़िंदगी जला दिया. इट एट मी अप मीन्स मेरे को पूरा जला दिया. दैट इज़ व्हाट, मेरी ज़िंदगी जला दिया. एंड व्हाट हैपेंड एंड नाउ इट्स लाइक दैट एंड दिस वुड नॉट एवर बी एनी डिफरेंट. और ये कभी बदल नहीं सकता. वो जले हैं सिर्फ फेस को नहीं, मेरे को जला दिया और मेरी ज़िंदगी जला दिया, जो सोसाइटी से मैं भागते रहा. दैट इज़ व्हाट है. मिस्टर लेम, नो, आर नॉट यू इंटरेस्टेड? मिस्टर लेम बोला, नहीं, आपको पूरा को नहीं जला दिया ना. यू आर ए बॉय एंड आर नॉट यू, आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है. देन रिप्लाई ऑफ द आर्मी ऑफिसर, यू आर ए बॉय हु केम इन टू द गार्डन प्लांटेड यू. I am interested in anybody, anything. There is nothing, God mad, that does not interest me. Look over there, over beside the far wall. What can you see? Rubbish. वो दीवार के लास्ट कॉर्नर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ rubbish, unwanted weeds or like that. Mr. Leb, rubbish?
लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? आपको क्या दिखाई दे रहा है वहाँ पर? सिर्फ रबिश, जस्ट ग्रास एंड स्टाफ एंड वीड्स। वीड्स मीन अनवांटेड प्लांट, जो जरूरत नहीं इस टाइप का झाड़ी। तो ये सब वहाँ पर उसको दिखाई दे रहा है डेरी को। सम कॉल देम वीड्स, लोग उसको अनवांटेड प्लांट बोलते हैं। इफ़ यू लाइक देन ए वीड गार्डन, अगर आपको पसंद लगा तो उसको गार्डन बोल सकते हैं, अनवांटेड प्लांट का गार्डन। एंड दैट्स देयर फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स ऑल शॉर्ट बार ओवर देयर वेड्स। यहाँ पर तो फ्लावर भी है गार्डन में, फ्रूट्स भी बहुत कुछ है, ट्रीज है, हर्ब्स, दिट इज़ व्हाट मेडिसिनल प्लांट भी है, बट आपको वही दिखाई दिया। आई ग्रो वीड्स दियर, मैं उन लोग को मैं ही खुद बड़ा करता हूँ। व्हाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल ए वीड? ये प्लांट जो बड़ा हो रहा है उसको अनवांटेड प्लांट क्यों बोलेंगे? अनदर फ्लावर, व्हाट्स द डिफरेंस? इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी। ये सब तो सेम पैटर्न में, जो फ्लावर का प्लांट होता है अनवांटेड प्लांट एक ही तो होता है, उतना दोनों का ग्रोथ प्रोसेस। दैट इज व्हाट मिस्टर लेम वांटेड to solace him, wanted to root out the feelings of handicaps. That is what engulfed him, and that's why he was afraid to face any people. So that is what a lamb, really good man who can feel the pain of another handicapped person. Daddy, we are not the same, but हम लोग एक नहीं हैं. I am old, you are young. That is what difference. मैं ये old हो, आप young हो. You have got a burn face, I have got a thin leg. Thin leg means नॉट इम्पॉर्टेंट। टीन लेग मीन्स उसका जो ओरिजिनल लेग है वो वार में बहुत डिस्ट्रॉय हो गया था, अभी टीन लेग लगा हुआ, टीन वन टाइप ऑफ मेटल्स। एंड यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर, व्हाट इज द डिफरेंस? आप वहाँ पर खड़े हो, मैं बैठा हूँ, डिफरेंस क्या है? दैट इज व्हाट ही वांटेड टू put all the things in a common matter, that is the creation of God. Daddy, why have you got a tin leg? आपको ये tin leg कहाँ से आया? Real one got blown off years back. Lemmy lambs, some kid says. बच्चे तरह तो लैंगड़ा लेम बोलते हैं, लेमी मतलब लैंगड़ा, लेकिन कई साल पहले एक तो ब्लोन ऑफ व्हाट डिस्ट्रॉय हो गया था ना, ब्लोन ऑफ एक्सप्लोसिव बॉम्ब में है। हैव नॉट यू हियर दैम? यू विल। लेमी लेम, इट फिट्स, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना। लेमी लेम डज नॉट ट्रैवल मी, मेरे को उसमें तकलीफ नहीं होता। बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस इन स्टीयर। आप ट्राउजर पहन के इसको छुपा सकते हो और कोई उसको तरफ देखते नहीं रहेंगे, जैसे मेरा फेस को देखते रहे। दैट इज व्हाट द इंटेंशन ऑफ टेरी ना। Some do, some don't. They get tired of it. In the end, there's plenty of other things to steer it. But उन लोग इसे देखते हैं, बट दुनिया में बहुत कुछ थिंग्स है जिन लोगों लोग फिक्स देखते रहते हैं। लाइक माई फेस, हाँ, लाइक crab apples or the weeds or a spider climbing up a silken ladder or my tall sunflowers. वो लोग सब कुछ दुनिया का लोग देखते रहते हैं, एप्पल्स को या अनवांटेड प्लांट्स को, स्पाइडर जो क्लाइंबिंग कर रहा है, और लैडर को या सनफ्लावर को। उसी टाइप का आपका फेस भी दुनिया का एक थिंग्स है जिसको लोग देखते हैं। दैट्स में अपसेट होने का कुछ नहीं। दैट इज व्हाट यू वांटेड टू टर्न थिंग्स, डेरी थिंग्स, इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट, सब दोनों एग्जिस्ट करते हैं एक सम। अच्छा थिंग्स और खराब दोनों लेके तो ये धरती बनते हैं। दैट इज व्हाट लेम ट्राई टू रूट आउट द फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी फ्रॉम द डेयरी। व्हाट्स दिस सपोज टू मीन? अब क्या बोलना चाहते हो? यू टेल मी, अब ही बताओ, मैं क्या बताऊँ? दैट इज व्हाट you don't think they have not all told me that the fairy story before? It's not what you look like, it's what you are inside. आप कैसे देखते हो मैटर नहीं करते, आप अंदर में क्या। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, ब्यूटी लव द मॉन्स्टर बेस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू हैंडसम। दैट इज़ व्हाट कि यहाँ पर माइथोलॉजिकल रिस्पेक्ट को प्रेजेंट किए। जब खराब होता है ना उसको कोई पसंद नहीं करते, एंड जो सुंदर होता है उसको सब पसंद करते हैं। इवन मॉन्स्टर बीस्ट को भी जब कोई ब्यूटी उसको किस्ट कर देते तो सुंदर हो जाते, हैंडसम प्रिंस हो जाते। ओनली ही वुड नॉट बी, ही वुड हैव स्टेड ए मॉन्स्टर बीस्ट, आई वुड नॉट चेंज। बट मेरे केस में मेरे को कोई पसंद ही नहीं करता, कोई बीस्ट नहीं यार, मैं ऐसे ही रहूँगा। दैट इज़ व्हाट, दिस इज़ माई डेस्टिनी। सो you find here कि Derry already handicapped, not physically but mentally. Society already degraded his feelings, and what happened? He became handicapped from internally. वो internally handicapped बन गया है. That is what the picture suggested here. Now in that way you would not, अगर इस टाइप का सोचोगे तो आप नहीं कुछ नहीं कर पाओगे. That is what
and no one will kiss me. तो मेरे को, and that is what, no one will show any love or affection. Only my mother, and she kisses me on the other side of my face. But only my mummy, that is what who kisses only in the world. But वो भी मेरा ये barn face में नहीं, दूसरा केस में. And I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. और वो ये करते हैं इसीलिए क्योंकि उसको करना पड़ेगा ना, because I am his child. I am her child. Why should I like that? I don't care if anybody ever kisses me. मेरे को नहीं पसंद है कोई करे या ना करे. Oh, but do you care if you oh, but do you care if you never kiss them? अगर आप उस लोग को कभी नहीं किस करेंगे तो उसमें तो आपको क्या करेंगे? What? Girls, pretty girls, long hair and large eyed people you love. उन लोग को अगर आप नहीं किस करो तो उन लोग को तो खराब लगेगा. Who'd let me? Not one. कौन मेरे को करने देंगे किस? That is what the lamb presented the questions in a reverse way. आपको कोई प्यार नहीं करते, इसलिए आप भी तो किसी को कर सकते हो. अगर आप नहीं करो तो आपका ऊपर तो उसको खराब लगेगा. Who can tell? इससे कैसे हो सकता है? तो लैम बोला इसे क्यों नहीं हो सकता है? ये अर्थ है, ये हर टाइप्स ऑफ सिचुएशन हो सकता है. लैम्प एक्जैक्टली ट्राइंग to restore his feelings of confidence that he is not totally handicapped. Derry, I would not even look different when I am as old as you. I will look the same. I will still only have half a face. तब भी आपका उम्र में भी जब आऊँगा तब भी मेरा ये आधा ही फेस रहेंगे ना. So you will, but the world would not. The world's got a whole face and the world's there to be looked at. क्योंकि आपका हाफ फेस है, वर्ल्ड का हाफ फेस नहीं है. वर्ल्ड किसी को रिजेक्टेड नहीं करता. ग्रेट फिलोसफी प्रेजेंटेड बाय मिस्टर लैम्प. क्योंकि दुनिया में जो जैसे वो फिलोसफी है ना कि कोई ज़िंदगी में यहाँ पर ज़िंदगी भर हंस नहीं सकते, उसी टाइप का दुनिया किसी को ज़िंदगी भर रुलाते भी नहीं. दैट्स मीन हियर यू हैव टू लव, यू हैव टू क्राई. दिस इज़ व्हाट द रूल्स ऑफ द यूनिवर्स. एंड लैम्प ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट फीलिंग्स इन डेरी. Derry, do you think this is the world? This old garden? आप ये gold garden को दुनिया समझते हो? Still, I am here, not the only one, but the world as much as anywhere. जब तक मैं यहाँ पर हूँ यही मेरा दुनिया है और ये बाकी दुनिया से कोई छोटा नहीं. Does your leg hurt? तो ये लेग आपका दर्द होते हैं? Because teen does not hurt, boy. ये तो टीन में कहाँ दर्द आते हैं? That is what Lem try to solace him, and his as a childish questions turned from various subjects from Lem to next. When it come off, did it? जब इसको निकाल देते हो तब दर्द होता है? Certainly, तब तो होंगे ना. And now I mean where the teen stop at the top, जहाँ पर टीन खत्म हुआ वहाँ दर्द होता है? No, now and then I wet weather it does not signify. अभी कभी बट ये ज़्यादा मैटर नहीं करता ना. और दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से. लुक एट ऑल दोज पीपल who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. जो कभी दर्द नहीं होता, जो पेन शर्मते और खुद के लिए सॉरी नहीं फील. आई हैव नॉट सेड इट, मैं इसे नहीं बताया आपको. एंड think of all those people worse than you. Think you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be daft in your head and drivel. अब दूसरा कुछ भी हो सकता है, दूसरा जितने टाइप ऑफ हैंडीकेप्ड होते हैं, बट दैट इज नॉट हैपन विथ यू ना. एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट. इट विल नॉट मेक माई फेस चेंज. इतना कुछ बोलने से दैट इज़ व्हाट, इसमें तो मेरा फेस और मेरा अपीयरेंस और मेरा जो लेवल है ये तो चेंज नहीं होंगे ना. दैट इज़ व्हाट डेरी डिड नॉट वांट टू कम आउट फ्रॉम हिज दैट इज़ व्हाट नैरो इन्फेरियर फीलिंग्स. डू यू नो वन डे मैन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट. आई वॉज एट ए बस स्टॉप. मैं बस स्टॉप में पास खड़ा था, एक वुमेन चले जा रहा था. एंड शी वॉज विथ अनदर वुमेन एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड व्हिस्पर्ड ओनली हियर हर. छुपके से क्या दूसरे वुमेन को बोले थे पता है? She said, looked at that. That's terrible things. That face only mother could love. इतना गंदा फेस ओनली उसके मम्मी उसको प्यार कर सकते. That is what this degrading comments, this what teasing comments of people and degrading look that's make him completely handicapped. Is that clear? कि डेरी को ये फीलिंग्स दुनिया से छुपने का
फीलिंग्स कहाँ से आई? यही सब टीजिंग कमेंट्स एंड डिग्रेडिंग लुक्स, एंड दैट्स व्हाई ही वांटेड टू हाइड, एंड दिस मेक हिम टोटली हैंडिकेप्ड ना। तो यहाँ पर आई थिंक्स ऑब्वियसली क्लियर कि एक पर्सन टोटली हैंडिकेप्ड नेचुरली नहीं होता, दैट इज सोसाइटी हु मेड हिम completely handicapped, who who destroy the feelings of क्रिएशन का जो क्वालिटी होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर दैन, तो आप जो कुछ सुनते हैं सब मान लेते हैं। इट वॉज क्रूएल, ये अच्छा नहीं था ना। मे बी नॉट मीन्ट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन दैम। वो ऐसा भी कोई सेंस नहीं बताया था जो आप वर्ड उसको पार्सीव किए थे, उस टाइप का सेंस में भी नहीं था, जस्ट एक जनरल ओनली आई हियर्ड जस्ट मैं सुना था ना। एंड इज दैट द ओनली थिंग्स यू एवर हर्ड एनी वन से इन योर लाइफ? आपको क्या वही एक ही वर्ड जिंदगी भर सुनाई दिया था और कुछ नहीं सुने थे? Oh no, I have heard a lot things. So now you keep your ears shut. आपका कान अभी बंद रखो, दुनिया से दुनिया को मत सुनो, खुद का सुनो. That is what Mr. Lam try to what teach you may call, try to advise or try to help him to come out from that inferior feelings. You are peculiar. That is strange, odd. आप अजब तरीका का इंसान हो. डेरी बताए ना. You say peculiar things. You ask question I don't understand. आप अजब तरीका का क्वेश्चन पूछते हो जो मेरे को समझ में ही नहीं आता. Exactly what happened? Derry exactly changed his concept and feelings, and now the lamb is what Derry is coming out from his inferior feelings. Na, Mr. Lamb, I like to talk, have company. You don't have to answer questions. You don't have to stop here at all. The gates open. आपको जब जैसे लगे वैसे आओ, चले जाओ, गेट खोला है. मैं क्वेश्चन करना पसंद करता हूँ, मैं लोग पसंद करता हूँ. दैट इज़ व्हाट मिस्टर लैम ट्राई टू सेड. डेयरी, yes, but I have a hive of bees behind those trees over there. Bee hives जहाँ पर हानी कलेक्ट करते हैं, तो उसका गार्डन में एक बी हाइव भी है. Some hear bees and they say bees buzz. Buzzing, बी का जो साउंड होता है वो बजिंग साउंड होता है, तो लोग सुनते हैं और बोलते हैं. But when you listen to bees for a long while, they hum and hum and sing. I hear them singing my bees. लोग बोलते हैं उन लोग बाजिंग करते हैं, मैं बोलता हूँ कि उन लोग गाना गाते हैं. तो एक्चुअली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हियर्स. दैट इज़ व्हाट नेचुरल, द साउंड क्रिएटेड बाय इज. लोग क्या बोल रहे हैं वो नेचुरल है, आप कैसे उसको ले रहे हैं, दैट इज़ व्हाट द मैटर. दैट इज़ व्हाट मिस्टर लेम ट्राई टू बट मेक हिम कन्विंस. बट आई लाइक इट हियर. आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल. जब मैं ये जगह मेरे को पसंद लगा, वो जो वॉल के ऊपर सीधा देखा तो अच्छा लगा, एंड दैट्स व्हाई. इफ़ यू हैड सीन मी यू डोंट हैव कम इन. अगर आप मेरे को देखते तो नहीं आता. नो, इट वुड हैव बीन ट्रेसपेसिंग. तब तो ये trespassing, enter without permission, that is called trespassing. Oh, that's not why. I don't like being near people when they stare, when I see them being afraid of me. जब मेरे ऊपर देखते रहते हैं, degrading look and teasing comment. That's why he wanted to hide himself. Na? Mr. Lam, you could lock yourself up in a room and never leave it. There was a man who did that. He was afraid, you see, of everything in this world. A bus might run him over, or a man might breathe deadly germs into him, or a donkey might kick him to death, or lightning might strike him down, or he might love a girl and girl would leave him, and he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him and would laugh their heads off. So he went into this room and locked the door and got into his bed and stayed there. ऐसी एक कहानी मिस्टर लैम बताई. एक आदमी जो सब कुछ को डरता था, बाहर आएंगे तो बस में एक्सीडेंट हो जाएंगे, कोई जार्म चले आएंगे, कुछ बनाना स्किन से स्लिप करके मर जाएंगे, इसीलिए एक बार घर में घुस के अंदर में खुद को लॉक कर दिया था. डेरी, फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर ए वाइल, कुछ दिन के लिए. देन व्हाट, तो उसके बाद क्या हुआ? ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल. दीवार से एक पिक्चर गिरे ऑन हिज हेड एंड किल हिम, और मर गया. तो ही वांटेड टू हाइड हिमसेल्फ, बट इफ इट इज डेथ, नो हायर इज सेफ. इफ इट इज डेथ, you are nowhere is safe. That is what Mr. Lem tried to taught him. Next, you see, Mr. Lem, you see, but you still say peculiar thing. आप अजब तरीका का. First time, Jerry felt something solace, something about someone giving importance to him, someone giving real masses. Peculiar to some, कुछ लोग के पास में अजब लगता. Peculiar, strange, odd.
व्हाट डू यू डू ऑल डे? आप दिन भर क्या करते हो? फर्स्ट टाइम डेरी आस्क ए क्वेश्चन बियॉन्ड देयर कॉन्वर्सेशन, बिकॉज फर्स्ट टाइम डेरी फील समथिंग really for his own world, a world where he can get respect, where he will get importance, and that is what the world created by Mr. Lem. Sit in the sun, सूरज में बैठे रहते हैं, read books, किताब पढ़ते हैं. Oh, you thought it was an empty house, but inside it's full books and other things full. आप तो सोचे थे घर खाली है, बट वो घर पूरा किताब में भरे हुए हैं. That is Mr. Lem told है. But there are not any curtain at the windows. कोई पर्दा नहीं लगा हुआ था विंडो में. I am not fond of curtain, shutting things out, shutting things in. मैं ये छुपाना पसंद नहीं करता. Shutting और छुपाना या hide करना. That's why I like the light and the darkness and the windows open to hear the window. Yes, I like that when it is raining. I like to hear it on the roof. मैं rain पसंद करता हूँ. इसका sound पसंद करते हैं. And ये that is what he likes, the natural. And that's why Darren. Next, so you are not lost, are you? Not altogether. You do hear things, you listen. आप सुनते हो. आप पूरा पूरी खोए नहीं गए हो दुनिया में ना. They talk about me downstairs. नीचे लोग मेरे बारे में बात करते हैं. When I am not there, what will he ever do? What's going to happen to him when we have gone? That is his parents. Parents सोचते जब हम लोग नहीं रहेंगे उसके क्या होगा बेचारा. And however will he get on this in this world looking like that, with that on his face? That's what they say. इस टाइप का बोलते हैं ना. सब हम मेरे ऊपर हमदर्दी दिखाते हैं. That's why he felt insulted, inferiority. Yeah? Lord, boy, you have got 2 arms, 2 legs, and eyes and ears. You have got a tongue and a brain. You will got on the way you want, like all the rest. And if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. आप अगर सोचे तो आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, एवरीथिंग नॉर्मल है, जस्ट पेस का एक साइड बाढ़ है. तो ये सब देखे आप मेरा किल क्यों, धरती का सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं जो बाकी लोग करते हैं. पेस देखे कौन क्या करते हैं. दैट इज व्हाट लेम ट्राई टू इनकॉर्पोरेट फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस अगेन. डेरी हाउ, कैसे? सम वे एज आई डू, सम वे एज बाकी लोग जैसे कि. डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? आपका कोई दोस्त है? हंड्रेड्स, बहुत सारे. बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस. इट्स ए बिग हाउस टू. इतना बड़े घर में आप अकेले. फ्रेंड्स एवरीवेयर. पीपल कैम इन, एवरीबॉडी नोज मी. द गेट्स ऑलवेज ओपन. They come and sit here, and in front of the fire in winter, kids come for the apples and pears, and for toffee, I make toffee with honey. Anybody come, so you have. मैं लोग आते हैं, ठंडी में आते हैं, अभी आते हैं. बच्चे एप्पल्स के लिए, टॉफ़ी के लिए मेरे पास आते हैं, क्योंकि वो टॉफ़ी बनाते हैं, वो जो गार्डन में हानी होते हैं उससे. सो दैट इज़ हाउ ही स्पेंड. ही हैज़ ही हैड फ्रेंड्स. एंड बट आई एम नॉट ए फ्रेंड. आई एम नॉट ए फ्रेंड. मैं तो आपका. सर्टेनली यू आर. अब भी हो. So far as I am concerned, what have you done to make me think you are not? आप मेरे दोस्त नहीं हो. इससे कुछ तो काम किए नहीं हो ना. You don't know me, you don't know where I come from and or even what my name is. आपको पता नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, इवन मेरा नाम भी नहीं पता ना. Why should that signify? वो क्या मतलब हुआ? Do I have to write all your particulars down and put them in a filling box before you can be a friend? तो आपका सब बायोडाटा लिख के दोस्ती बनाते हैं कोई क्या? I suppose not. No, that is what dairy. तो मेरे को नहीं लगता. But what happened? Indirectly, Lem try to give him a confidence that. Next, Mr. Lem, you could tell me your name. आपका नाम बता सकते हो if you choose, and not if you did not. Dairy, only it's Derek. मेरा नाम Derek है ना. But I had that, Dairy. If I'm your friend, you don't have to be mine. I chose that, certainly. I might never come here again. You might never see me again, and then I could not still be a friend. Why not? मैं यार फिर कभी दोबारा नहीं आऊँगा ना, और कभी मिलेंगे नहीं, तो हम लोग फ्रेंड कैसे हो सकता है? तो लेम बोले कैसे? Why not? How could I? You pass people in the street and you might even speak to them, but you never see them again. It does not mean they are friends. अब रास्ते में बहुत लोग आते जाते मिलते हैं, उन लोग से दोबारा मिलेंगे भी नहीं, तो उन लोग का दोस्त कैसे बोल सकते हैं? Does not mean they are enemies either, does it? तो उन लोग दुश्मन भी नहीं है ना.
दुश्मन है क्या? नहीं है ना. नो, दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल. उन लोग कुछ नहीं, जस्ट लोग लोग है ना. पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर. पीपल, लोग मतलब लोग कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता. लोग लोग तो है ना, कुछ नहीं है कैसे बोल सकता है. देयर सम पीपल आई हैड, बट बहुत लोग हैं जिसको मेरा पसंद नहीं लगता. That would do you more harm than any bottle of acid. Acid only burns your face. People को तो आप जो घृणा करेंगे तो आपको अंदर से जला देंगे. Acid तो just आपका face को जलाया. So only that is what he has stopped here. He cannot speak out again. He what bubbling here ना, कि उसको इंटरनल जो इन्फेरियोरिटी था उसको रूट आउट कर दिया मिस्टर लेम. एंड बहुत सा. सो अप टू हियर 35 मिनट्स हो गया. नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में हम लोग बाकी लाइन वाइज एक्सप्लेन करेंगे ना. थैंक यू.